चलिए, in the last session of the class, I told you how to calculate the center of mass for the rigid bodies. यानी कोई भी continuous body होता है जैसा rod, solid sphere, cone वगैरह, उसके लिए हम लोग what will do? We take the help of your integration. अगर center of mass x axis पे lie कर रहा है तो we use the axiom का formula, that is integral of x into dm divided by integral of dm. Integral of dm कभी भी कितना होता है बेटा? Integral of dm will always be equal to capital M. यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, that is 1 by capital M इंटीग्रल ऑफ योर x into your dm. ठीक है ना? अगर सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो दैट आई कैन राइट एज ऑफ योर 1 by capital M into इंटीग्रल ऑफ योर y into your dm. अगर y z एक्सिस पे लाई कर रहा है तो दैट विल बी इक्वल टू योर 1 by capital M into इंटीग्रल ऑफ योर z into your dm. ठीक है ना? अब एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर. सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस r. मेरे पास एक वायर है जिसका मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल L है, और इसका मास, इसमें मैंने क्या किया, इसको वी हैव बीन कन्वर्टेड इनटू सेमी सर्कुलर वायर. इट इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ व्हाट? सेमी सर्कुलर वायर. सेमी सर्कुलर वायर. सो सेमी सर्कुलर वायर है तो मैंने सेंटर ऑफ मास से मैंने इसका कोऑर्डिनेट ले लिया x और कोऑर्डिनेट ले लिया y. एंड यू नो दैट सेंटर ऑफ मास विल लाई समवेयर अलोंग योर y एक्सिस, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन इज अलोंग y एक्सिस, isn't it? So total mass जो है ना, it is distributed on the circumference of this wire. The circumference of this wire. So what I did is I took one small element of mass, that is nothing but dm, जिसका width होता है dx, जिसका width होता है dx. Dx is equals to arc length is nothing but equal to radius multiplied by the small angle, and this small mass is at an angle theta from x-axis. So this radius r can be divided into two parts, beta. One is y-axis, one is x-axis. See here, this r, or it is making an angle theta. The x coordinate is r cos theta, y coordinate is r sin theta for the small element dm. Now how do you calculate the dm, beta? dm is always calculated by cutted mass by original mass is equal to cutted length by original length for one dimension bodies. For one dimension bodies, cutted mass divided by original mass. I'll write here cutted mass divided by original mass. कभी भी निकालने का तरीका बेटा, cutted mass divided by original mass is equals to cutted length divided by original length. dm. So cutted mass is how much? dm. Original mass is capital M. Cutted length is dx. Original length is capital L. So for one dimension body, this is the formula. That means dm will be equal to how much, beta? M by L into dx. M by L is known as linear mass density, beta. Lambda is equals to your dm divided by dx. लैम्ब्डा क्या होता है? लीनियर मास डेंसिटी. लीनियर मास डेंसिटी. यूनिट्स क्या होता है बेटा? केजी पर मीटर. ठीक है ना? सो दिस dx इज नथिंग बट बेटा आर्क लेंथ. dx की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर देखो, r इंटू डी थीटा. सो m by L इंटू योर r इंटू डी थीटा. यहाँ तक आया सभी को? यूज द फॉर्मूला बेटा. एज द सेंटर ऑफ मास इज लाइंग अलोंग y एक्सिस, as center of mass is lying along x-axis, तो हम लोग x-axis, sorry y-axis, not x-axis, देखो y-axis पे लाई कर रहा है ना, so this will be along y-axis. तो YCM का फॉर्मूला ले लीजिए. YCM is equals to integral of your y into your dm divided by capital M. So that is equals to integral, y value is how much beta? Y value is how much? R into your sin theta into your dm. dm value is how much for me? M by your L into R into d theta divided by total mass, that is nothing but capital M. This capital M will get cancelled. So all the constants you bring it out. This is nothing but of your R divided by L. R into R square. So here there is one r, and here there is one r. R square divided by your done, beta.
चलो, this is your integral of your sin theta into your d theta. Now, can anyone tell me what will be the length beta here? This length L is bent in the form of semicircular disc. मतलब इसका जो length हो गया, this will be equal to how much beta? Pi into r. So length will be equal to pi into your r. ठीक है ना? So that means that will be equal to your r square divided by capital L is equals to pi into r. Circle का आधा ना, that is integral of your sin theta into your d theta. Limits are from 0 to pi radians. ये r square और ये r चले गए, तो बचा कितना बेटा? So this will be equal to r divided by your pi. Integral of sin theta into d theta कितना होता है बेटा? Minus of your cos theta. Limit होता है 0 से लेके pi तक. So that is equals to your r divided by your pi into your minus upper limit minus lower limit. That is cos pi minus cos of your 0. Minus of minus na beta. So this will be equal to minus cos theta. So this will be equal to minus of your cos 0. So that is equals to r divided by pi into, this is minus cos 180 is nothing but minus 1. Minus minus, this will become for me plus. So this will be equal to your 1. So minus minus will become for me 1. So this is equals to your r divided by pi into 1 plus 1. So the answer will be equal to 2r divided by pi. That means YCM will be equal to, for this how much for me beta? 2r divided by pi. इतना आप लोग फॉर्मूला याद रख लिए फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफी है. नीट के बच्चे उसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है. अगर एमपीसी के बच्चे हैं तो डेरिवेशन थोड़ा बहुत याद रख लीजिए, अदरवाइज उतना ज्यादा भी यूज नहीं होगा एमपीसी के बच्चों के लिए. लेकिन जेई मेंस के बच्चों के लिए तो कंपलसरी मेथड आप लोग को मालूम है ना कि हाउ वी आर डिराइविंग द डेरिवेशन. तो मैं ये बोल सकता हूँ फॉर सेमी सर्कुलर वायर सेंटर ऑफ मास कहाँ ऐड करेगा बेटा? वाई एक्सिस पे ऐड करेगा और एक्स एक्सिस पे से कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे? 0. सो देयरफॉर आई कैन राइट हियर आंसर विल बी coordinates will be 0 comma 2r divided by your pi. आया समझ में सभी को? एक बार देख लीजिए बेटा. As the center of mass is lying along y-axis, I am using the formula YCM is equals to integral of your y into dm divided by m. अब यहाँ पर देखो बेटा, ये जो लेंथ L है ना, this is bent in the semicircle, तो इसका लेंथ कितना बन गया बेटा? L is equals to pi into r. सेमीसर्कुलर पाथ में बेंड किया ना, इसीलिए. तो डीएम निकालने का तरीका कटेड मास बाय योर ओरिजिनल मास इज इक्वल्स टू कटेड लेंथ बाय योर ओरिजिनल लेंथ. कटेड मास कितना है? डीएम. ओरिजिनल मास कितना है? कैपिटल एम. कटेड लेंथ कितना है? डीएक्स. ओरिजिनल लेंथ कितना है? एल. So for one dimension body I can write dm is equals to your m by l into your dx, and it is equals to m by l into dx value will be equal to r into d theta. So as the center of mass is lying along y axis, YCM is equals to integral of y into dm divided by capital M. And what is the value of y? See this one. Y is equals to r into sin theta. That means this mass is how much distance from the y axis. So along the x part, it is vertically the distance of r into sin theta. So y value I have written as r into sin theta. Dm is equals to m by l into r theta divided by capital M. Capital M will get cancelled. So r into r square divided by capital L into sin theta into d theta. So this value of L will be equal to how much beta? Pi r. So 1r and square will get cancelled right now for that one. So it is r by pi. Now integral of sin theta is equals to how much beta? Minus of cos theta. Limits are from 0 to your pi. Now how do you substitute the limit? Upper limit minus lower limit. So it is minus cos of your pi minus of cos 0. So cos 180 is how much beta? Minus 1. Minus will become for me plus. So simplifying it, we are getting 2r divided by pi. Clear? Any doubt in this derivation to anyone? Clear है बेटा? Any doubt to anyone?
लिखना बेटा, नहीं तो परेशानी होती, बाद में बोल रहा हूँ मैं बीच। तो फॉर ए सेमी सर्कुलर वायर व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? YCM is equals to 2R divided by your pi। और के एग्जांपल करा रहा हूँ, देखो बेटा इस एग्जांपल पे सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म semicircular plate, semicircular plate, semicircular वायर और semicircular प्लेट का डिफरेंस क्या है बेटा? प्लेट के लिए टोटल मास रहेगा थ्रू आउट द बॉडी, वायर के लिए मास नहीं था। सो एक प्लेट को मैं n नंबर ऑफ सेमीसर्कुलर वायर्स में बेंड कर सकता हूं। दिस इज सेमीसर्कुलर प्लेट बेटा, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया y एक्सिस, और ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट अलोंग योर x एक्सिस। अभी क्या है कि इसको टोटल मास है थ्रू आउट योर y एक्सिस। ठीक है, throughout the plate there is a mass। तो क्या इस प्लेट को मैं n नंबर ऑफ रिंग्स में कट कर सकता हूं क्या बेटा? कैन आई कट दिस वन इनटू योर n नंबर ऑफ योर रिंग्स? जैसा मान के चलो यहां से यहां तक मैंने एक एलिमेंटल रिंग लिया इस तरह से, ठीक है, यहां से यहां तक एक छोटा सा रिंग शेप में मैंने इसको कट कर रहा। ऐसे कितने रिंग्स ले सकता हूँ? n नंबर ऑफ रिंग्स ले सकता हूँ, ठीक है ना। दिस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस एलिमेंट व्हिच हैव बीन कटेड हियर, राइट। ऐसे कितने वायर्स कट कर सकता हूँ बेटा प्लेट में से? n नंबर ऑफ योर रिंग्स कट कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसका रेडियस देखिए बेटा, यहां से यहां तक इसका रेडियस हो गया कैपिटल R, और इसका रेडियस जो है ना स्मॉल एलिमेंटल रिंग का रेडियस है स्मॉल r, इसका रेडियस है कैपिटल R, ठीक है ना। दिस इज सेमी सर्कुलर प्लेट, दिस इज योर सेमी सर्कुलर प्लेट। So this one is your semicircular ring, semicircular ring, ठीक है ना। और इसका जो थिकनेस है या विड्थ है that will be equal to dr। ये जो पार्ट मैंने लिया ना, इस कट करे से पार्ट को अगर मैं बाहर लेके आऊं तो क्या ये इस तरह से कुछ था? मैंने सेमी सर्कुलर वायर को मैंने जो कट किया बाहर लेकर के रखा, तो ये हो गया मेरे पास इसका डायमेंशन इस तरह से, डन।
सो इसका लेंथ विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, पाई आर, क्योंकि सेमी सर्कुलर कितना है और इसका विड्थ कितना है बेटा, डी आर, यानी इसका एरिया कितना बन जाएगा, ये जो मैंने पार्ट कट किया, सो कटेड एरिया विल बी इक्वल टू, area will be equal to its length into thickness, length into thickness, length is how much, pi r, into thickness कितना है, dr, ठीक है ना। So this is a two-dimension body. For 2D, how do you take the small mass? इसका ये mass कितना होता है बेटा, dm. For 2D bodies, same, cutted mass divided by original mass is equals to cutted area divided by original area. 3 dimension के लिए वॉल्यूम ले लेना है बेटा, 1 dimension के लिए लेंथ लेंगे, so it is dm is equals to your m divided by original area of the plate will be equal to pi r square. area of semicircular plate कितना होता है बेटा, pi into capital R square into cutted area, cutted area मतलब ये वाला area is equals to length into its thickness, यानी ये कितना बन गया बेटा, pi r into dr, तो ये पाई और ये पाई गेट्स कैंसिल, सो कटेड मास विल बी इक्वल टू योर m by your r square into r into your dr, r into your dr आ गया, this is your cutted mass, dm is equals to your m by r square into your small r into your dr आ गया, is that clear? ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर किसके लिए होता है बेटा, पूरे सर्किल के लिए होता है, ये हाफ है तो इसको हाफ कर दीजिए, isn't it? तो कितना बन जाएगा, 2m, तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. सेमी है ना बेटा, सेमी सर्कुलर प्लेट, पूरे प्लेट के लिए कितना होता था, पाई आर स्क्वायर, हाफ ऑफ द प्लेट के लिए एरिया कितना बढ़ गया, पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी dm will become for me 2m divided by r square into your r into dr, हो गया बेटा। तो मैंने क्या किया है, सर्कुलर प्लेट में से एक स्मॉल एलिमेंटल रिंग को कट किया हुआ है, जिसका रेडियस कितना है बेटा, r, विड्थ कितना है, dr, मास कितना है, dm. सो फॉर सेमी सर्कुलर रिंग जो मैंने कट किया हुआ है, उसमें से स्मॉल एलिमेंटल रिंग ले रखा है, उसका लेंथ कितना है, पाई r, एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ यानी थिकनेस, सो पाई r इनटू dr. ये सेमी सर्कुलर प्लेट है, सेमी सर्कुलर प्लेट का एरिया कितना होता है बेटा, पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू एक्चुअल एरिया। कौन सा बॉडी है, 2 डायमेंशन बॉडी है, ठीक है ना। सो कटेड मास इज इक्वल टू ओरिजिनल मास डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया इनटू कटेड एरिया, सो ओरिजिनल एरिया इज पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो सिंपलीफाई कर लीजिए, dm इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर इनटू r इनटू dr, ठीक है ना। सो फॉर सेमी सर्कुलर रिंग अपने को सेंटर ऑफ मास मालूम है, isn't it? For semi circular wire, center of mass will lie along y-axis ना बेटा, so ycm will be equal to 2 into r divided by pi, क्योंकि इसका रेडियस यहाँ पर दे रखा है कितना बेटा, स्मॉल r, तो y-axis पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, तो ycm का फॉर्मूला लगा लीजिए, ycm is equals to integral of y into your dm divided by integral of your dm, ठीक है ना। So that is equals to 1 by capital M integral of your, यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 2r divided by your pi into dm, dm की वैल्यू 2 into m divided by r square into r into your dr, ठीक है ना। इसमें से m और इसमें से m कट जाएगा, so that is equals to 2, this will be equal to your 2 into 2 मतलब यह बन गया 4 divided by pi into your r square, ये बाहर ला लीजिए, integral of your r into r, this will become for me r square into dr, limit will be from 0 to capital R, ठीक है ना। Now use this formula, integral of x to the power of n into dx is equals to your x n plus 1 divided by n plus 1, तो इंटीग्रल ऑफ योर x की जगह क्या है r, n की जगह 2 into dr will be equal to your r 2 plus 1 divided by 2 plus 1, यानी हो गया r cube divided by 3, यानी this value will become for me 4 divided by pi into r square, integral of r square into dr will be equal to how much beta, r cube divided by 3,
limits will be from 0 to capital R. So that value will be equal to your 4 divided by pi into your capital R square. So this value will be equal to into R cube divided by 3. Upper limit minus lower limit. Done. So in this one, this will get cancelled with this R square and 1 square in this will get cancelled. So center of mass, what I am getting is right now for me, for the semicircular plate, YCM will be equal to 4R divided by 3 pi. YCM will be equal to your 4R divided by 3 pi. For semicircular plate, what is the center of mass? Matlab, center of mass will be equal to your 4R divided by 3 pi. Clear for everyone? आया सभी को? देख लीजिए बेटा, कोई डाउट रहा है तो प्लीज लेट मी नो. डेरिवेशन एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से. किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन चैट विथ मी बेटा, या अनम्यूट होके बात कर सकते हो मेरे से. गिविंग एन ऑप्शन टू अनम्यूट योरसेल्फ. किसी कुछ डाउट रहा है तो यू कैन अनम्यूट एंड ट्राई टू टॉक टू मी बेटा. लिमिट इसलिए मैंने 0 से R लिया, देखो बेटा, इसका जो वैल्यू होता है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है, इसकी वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होती है, और ये यहाँ से स्टार्ट करके ये मान के चलो ये ऐसा वाला डिस्क था, तो ये वाला इसका सेंटर, ठीक है ना. तो इसका लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, ये तो मेरे पास इनिशियल लिमिट है, तो यहाँ से मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, तो लिमिट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना बेटा.
तो एंगल कितना बना बेटा 0 to पाई अगर वायर ले रहे तो। लेकिन यहाँ पर पूरा मास है ना इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से पूरा मास है तो इसका लिमिट कहां से जाएगा बेटा, यहाँ से बड़ा 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 और कितना हो जाएगा आर। खाली वायर होता तो 0 से लेके पाई तक गया, यहाँ तो पूरा मास भरा हुआ है ना बेटा। जब मास भरा हुआ है तो along the y axis it is mass is distributed along y axis. वायर में mass distributed is only on the circumference, isn't it? इसलिए लिमिट यू आर गोइंग फ्रॉम 0 to your pi। यहाँ पर जिसके पास मास होगा तो यहाँ से 0 से लेके r तक y axis पे, ठीक है। क्लियर है? चलिए, आपको और कितने चैप्टर्स करना है बेटा, इतना डिटेल करना है और कितने चैप्टर्स करना है फर्स्ट ईयर के अंदर? आप लोग जरा मुझे लिख के भेज दीजिए बेटा। ये वीक के अंदर अपन सेंटर ऑफ मास खत्म कर सकते हैं। रोटेशन मैकेनिक्स हो गया आप लोग का? आईबी का तो सिलेबस हो गया होगा, एसएचएम वगैरह। SHM is completed. Sure. Okay. रोटेशन मैकेनिक्स हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन अभी लेफ्ट है, ओ माय गॉड। ठीक है, रोटेशन स्टार्ट कर लेंगे बेटा इसके बाद कंटिन्यूअसली। और एक दो क्लासेस में अपन, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहा है इसलिए टाइम लग रहा है बेटा। अगर थोड़ा जो बेसिक्स अगर आपके पास स्ट्रांग हो जाए ना तो रोटेशन में जाना ये भी हो जाएगी, क्योंकि रोटेशन भी बड़ा चैप्टर है। आप लोग सभी एमपीसी है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एमपीसी एंड बाईपीसी इन द क्लास? अगर बाईपीसी बच्चे हैं तो डेरिवेशंस पे मत कंसंट्रेशन करिए बेटा, यूज नहीं होगा। सिर्फ आप लोग हेडिंग पढ़ लीजिए, उसका फॉर्मूला याद रख लीजिए। डेरिवेशंस आर ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, नीट के लिए कुछ भी यूज नहीं होगा, ओनली फॉर जेईई मेंस के बच्चों के लिए यूज होगा वो। नीट के बच्चे डायरेक्टली जैसे सर्कुलर प्लेट है, सेमी सर्कुलर प्लेट मतलब उसका सेंटर ऑफ मास आपको याद आ जाना, राइट नाउ 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई वर्ग ऐसा, ठीक है। चलो, नोट्स पढ़ रहे हो ना? नोट्स आई एम सेंडिंग यू एवरी डे।